Good morning, students. Welcome to the online class by ITN Public School. I hope you all are doing well. Today I am starting a topic transportation in organism. I have already explained the topic transportation. What is transportation? What is the need of transportation? But I will explain again what is transportation. ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? पहले ये मुझे समझना पड़ेगा कि what is transportation. So transportation is nothing but the movement of different types of substance inside the body like hormones, blood, oxygen, carbon dioxide and other waste products. This type of movement occurs through the process of transportation. What is the need of transportation? Transportation की जरूरत है क्या? Transportation की जरूरत बहुत ज़्यादा important है higher organism. जैसा कि आपको पता है कि हायर ऑर्गेनिज्म में एनर्जी नीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है. द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज मच हायर देन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ. तो हायर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस माना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस माना जाता है. व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? वन सेकेंड. What is transportation? Transportation is the movement of substance inside the body of an organism. This is the basic definition of transportation. It is a simple biological life process which helps in the movement of various substances like hormones, carbon dioxide, oxygen, and other various products, excretory products as urea, uric acid, ammonia. This type of movement occurs through the process of transportation. So transportation is nothing but the movement of different types of substance inside the body for transportation. I have already explained the life process. What are life process? Life process are important biological process by which an organism survive and sustain. It helps the organism to survive and sustain on the earth. Transportation is one of the four important life processes. What is transportation? I am repeating again. Movement of substance inside the body of an organism. Movement of various substance inside the body of an organism is called transportation. The second question is, what is the need of transportation? What is the need of transportation? The second question जो तुमको पूछा जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन का नीड है क्या, जरूरत क्या है ट्रांसपोर्टेशन का हायर ऑर्गेनिज्म. हमको पता है कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है. और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के पास कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं. उसको अगर मूवमेंट करना होगा तो सिंपली वो प्रोसेस यूज करेगा. तो प्रोसेस विल बी डिफ्यूजन. डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज पॉसिबल इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. लेकिन जैसे जैसे सेल का काउंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तुम्हारा होता जाएगा, फॉर एग्जांपल वी एज अ ह्यूमन और अदर मैमल्स, हम लोग का जो एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी नीड है बहुत ज्यादा है, ठीक है. और इस एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए एनर्जी, हाउ डज एनर्जी फॉर्म? एनर्जी बनता कैसे? व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? ठीक है. पहले हमको एक्सप्लेन कर चुके प्रीवियस क्लासेस में कि व्हाट इज द प्रोसेस which helps in the formation of energy. The process is also one of the life process called respiration or respiration. Respiration है क्या? ठीक है. Respiration है क्या? Respiration is the biological process in which food or glucose is mixed with oxygen to form energy, and it is water vapor and carbon dioxide. What is the chemical formula of glucose? What is the chemical equation of glucose? So I am writing this chemical equation of glucose. अगर तुमको ट्रांसपोर्टेशन समझना है तो तुमको रिलेट करना पड़ेगा रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन होता क्या? व्हाट इज रेस्पिरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू फॉर्म वाटर वेपर, carbon dioxide and energy. What is the chemical equation?
What is the chemical equation of respiration? Respiration, the chemical equation. The formula of glucose C6H12O6 जो कि हमको फूड से मिलता है, किसके साथ रिएक्ट करेगा? इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. What are the products formed? First of all, basic or fundamental energy. Second, water vapor, and third is the excretory product of human or carbon dioxide CO2. This is the basic equation responsible for the respiration. तो रिस्पायरेशन होने के तुम देख सकते हो ऑक्सीजन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ग्लूकोज जो कि फूड से हम ऑब्टेन करते हैं उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है. क्या क्या मेन प्रोडक्ट्स बन रहा है? एनर्जी, water vapor, and carbon dioxide. Okay, these are the main products of the respiration. These are the byproducts. These are the byproducts, and this is the main product. This is the main product. And which type of respiration? This is aerobic respiration. I have already explained what is aerobic types of respiration, aerobic and anaerobic respiration. There are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. What is aerobic respiration? The respiration which takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration. What is anaerobic respiration? The respiration which takes place in the lack of oxygen or complete absence of oxygen is called anaerobic respiration. So this is aerobic respiration. This is the basic fundamental process for energy formation in all the organisms. From a single cell bacteria to a multicellular whale. You know, largest land animal or largest animal in the world is whale, blue whale. तो चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सब में जो बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व है एनर्जी फॉर्मेशन की, दिस इज द बेसिक प्रोसेस. आइदर अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म और अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज द बेसिक प्रोसेस, बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, which is called aerobic respiration. What is aerobic respiration? I am repeating again. What is aerobic respiration? Okay. Formation of energy with the help of glucose and the obtained oxygen is called respiration. तो respiration होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत जरूरी है. यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, why is there a need of transportation in higher organism? लोअर ऑर्गेनिज्म हम देख चुके हैं, जैसे अमीबा. अमीबा में तुम्हारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन से होता है. डिफ्यूजन कैसे होता है? थ्रू द स्किन सरफेस. But in higher organisms like humans or other mammals, there is a proper circulatory system for the transportation of different substances inside the body. What is circulatory system? आगे जाना है, but पहले समझते हैं why is there a need of transportation in higher organisms. अच्छा ठीक है, ये जो प्रोसेस रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. Aerobic respiration is also called cellular respiration. Cellular respiration या respiration, whatever you say. Why is it called cellular respiration? Because the process of aerobic respiration occurs inside every cell of the organism. हर एक सेल में तुम्हारा ये प्रोसेस देखने को मिल रहा है एवरी मोमेंट ऑफ अ सेकंड. तो हर एक सेल के अंदर ये तुम्हारा सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस देखने को मिल रहा है. एंड जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है, व्हाट आर द मेन रिएक्टेंट? ग्लूकोज and oxygen. These are the two main reactants which react with each other and form the extraordinary compounds like energy, water vapor or CO2. तो आखिरकार सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचा कौन रहा है? How does the transportation or the movement of glucose and oxygen reach every cell of the body? How is it possible? It is possible because of the transportation. It is possible because of the circulatory system. It is possible because of the blood. It is possible because of the most important organ, one of the most important organ of the body, called the heart. What is the function of heart? What is the function of blood? What are the functions of blood vessels? We will see. But
Currently, we'll only talk about what is transportation and why is there a need of transportation. तो हायर ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी नीड कंपेयर टू द लोअर ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है. लोअर ऑर्गेनिज्म में एनर्जी नीड बहुत कम है बिकॉज उसको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता नहीं है. ठीक है, वी एज अ मैमल वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड वी हैव टू कॉन्स्टेंटली मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आवर सराउंडिंग. ठीक है, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो हम लोग बॉडी का टेम्परेचर गर्म होगा. अगर बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक ठंडा होगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग. तो फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली देयर इज अ हायर एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द बॉडी. और एनर्जी को बनाने के लिए हर एक सेकंड प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई और ग्लूकोज का सप्लाई होना चाहिए. अगर दोनों में कोई एक भी तुम्हारा रिएक्टेंट सही से सही अमाउंट में नहीं मिले तो एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होगा और वी विल फील वीक. तो क्वेश्चन आया होता है हाउ डज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज अकर इनसाइड द ऑर्गेनिज्म और मैमल्स और हायर ऑर्गेनिज्म. आखिरकार ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे, ये मेनली पढ़ना है इस चैप्टर. तो द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज और एनी अदर सब्सटेंस the movement of glucose or any other substance is possible due to a system or organ system called circulatory system. Circulatory system. Okay. It is the organ system which is responsible for the transportation of different types of substance inside the body. It is a system which helps in the movement of various substances. What are the various substances? Like oxygen, glucose, CO2, hormones, waste products like urea, uric acid, etc. These are the various substances which has to be transported to each and every cell of the body or throughout the body. And the system which is responsible for the transportation of the following substances is called circulatory system. It's called circulatory system. This is the basis of transportation in higher organism. Okay. तो आखिरकार circulatory system क्या क्या consist करता है? What are the main components of the circulatory system? Okay. तो main components of the circulatory system are. Give me time. What are the main components of circulatory system? तो मेनली हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? मेनली चैप्टर में हमको पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन अकर इन ह्यूमंस, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अकर इन प्लांट्स एंड हाउ डज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ठीक है, और ईस्ट और एनी अदर ऑर्गेनिज्म. तो पहले हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. द फर्स्ट टॉपिक शुड बी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. The first topic should be होना चाहिए transportation in humans. ठीक है, how does the process of transportation occur in humans? How does the process of transportation occur in humans? Transportation occur in human, I've already said, with the help of system called circulatory system. Circulatory system. Circulatory system क्या है? It is one of the organ system of our body which help in the movement of various substances inside the body. What are the components of the circulatory system? There are various components, but we only talk about the three components. First is the most important fluid or the circulatory fluid of our body called blood. Second is the one of the most important organ of our body after the brain, that is called the heart. There are two most important organs of our body which help to survive. First is the brain. Second is the heart. Heart is the pumping organ of our body. ठीक है, ये पंप की तरह काम करता है. काम है क्या इसका, हम आगे देखेंगे. और थर्ड कंपोनेंट आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स. So there are three components of the circulatory system. First is blood, second is the heart, and third is blood vessel. What are blood vessels? Blood vessels are the passage or the path through which the blood flow inside our body. How many types of blood? There are two types of blood, oxygenated and deoxygenated blood. And other type of fluid is also present called lymph, but we will talk about it. First, what is blood?
what is the importance of blood? How does blood help in the transportation of different types of substance? तो ब्लड है क्या? ठीक है, कि ब्लड के बारे में तुम जानते क्या हो? व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड इज द सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ आवर बॉडी. व्हाट इज फ्लूइड? ठीक है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड फ्लूइड. ठीक है, फ्लूइड हम किसके लिए यूज करते हैं? फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस व्हिच हैव एबिलिटी टू फ्लो. ठीक है, जो भी चीज फ्लो कर सकता है, बह सकता है, उसको हम फ्लूइड्स बोलेंगे. एग्जांपल मिल्क, वाटर, एयर, gases, oil, these are all called fluids. Fluids are any substances that have ability to flow, जो बहने का ability लगता है, flow करने का ability. For example, हम लोग बोलते हैं air flow कर रहा है, that is called fluid. पानी flow कर रहा है, that is called fluid. तो blood is also a fluid. What type of fluid? A circulatory fluid. A circulatory fluid. Circulatory fluid. ठीक है, why is it called circulatory fluid? Because it helps in the circulation of different types of substance throughout the body. समझो इस बात को, हर एक सेल तक पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्सटेंस की. ठीक है, the transportation of oxygen and glucose has to be transported to each and every cell of the body, and for the transportation to make possible, ठीक है, circulatory fluid or the blood is important. What are the functions of the blood? What are the functions of the blood? Blood have different types of functions. पहले जानते हैं blood है क्या? Blood is, पहले बताया blood is circulatory fluid. ठीक है, points wise हम बता रहे हैं blood क्या है? Blood is a circulatory fluid which flow throughout our body, throughout our organ system. Second, blood is generally red in color. ठीक है, why is the redness of blood occur? ठीक है, blood का कलर रेड क्यों है? Because of a substance called hemoglobin. Blood का कलर रेड क्यों? Because of substance called hemoglobin. Hemoglobin is the pigment or the protein which is responsible for the redness of the blood. Third, blood consists of different types of. Blood consists of 4 types of components. Okay, first is plasma, second RBCs, third WBCs, and fourth platelets. These are the important components of the blood. We will talk about later or in the next lecture. But for today, I will only focus on blood and functions of blood. What can be the functions? Can you tell me what are the functions of the blood? Blood has various functions, multiple functions inside the body, but we will only focus on the main functions or the primary functions of the blood. Understood? Blood is circulatory fluid. Second, it is red in color due to the presence of a protein called hemoglobin. What are the functions of the blood? Okay, blood have different types of functions. Okay. For example, I am only explaining primary functions of the blood. First, blood helps in maintaining our body temperature. Okay. First of all, we are warm-blooded animals, so blood helps in maintaining our body temperature. कैसे maintain होता है body temperature? When the temperature of our surrounding is generally high, our body become cool by a process of sweating. When our surrounding temperature is generally low, for example, विंटर सीजन चल रहा है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा चिली वेदर है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, तो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है. ठीक है, तो आखिरकार ये प्रोसेस कर कौन रहा है? ठीक है, कौन मेंटेन कर रहा है बॉडी टेम्परेचर? मेंटेन करने का काम है ब्लड का. वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. And second function would be blood helps in maintaining water balance inside our body. तो body के अंदर अगर water balance maintained है because of blood. ठीक है, because of blood our water balance is maintained inside the body. Third function would be we have WBCs, white blood cells in our blood, which are submerged in our blood. What are the functions of WBCs? WBCs helps in fighting germs and infection which enter through body through different means. They are called pathogens. What are pathogens? Pathogens are the germs or the microorganism which causes disease in humans or any other animals. Okay? For example, dengue virus is caused by female Aedes mosquito. So dengue virus is pathogen. Okay? Rabies is a very lethal disease known to humans, okay? Which are spread by dog bite.
डॉग बाइट से रेबीज फैलता है, तो रेबीज वायरस इज अ पैथोजन, वी आर होस्ट, हम लोग कैरियर है, और कैरियर कोई भी हो सकता है। तो these are called pathogens or microorganisms which causes a disease are called pathogens, ठीक है। तो अगर कोई फॉरेन पैथोजेंस, फॉरेन मतलब कोई बाहरी पैथोजेंस अगर बॉडी में एंटर करता है थ्रू एनी पैसेज, ठीक है, लाइक दिस विंड पैसेज और माउथ और थ्रू आईज, ठीक है, बाय एनी पैसेज, if it enters, it will attack the host cell, ठीक है, it will attack the host cell, the host cell will get infected and the virus will start reproducing in its community. So WBC helps in fighting foreign germs, okay? So these are the functions, these are the primary functions of the blood, okay? तो for today, ठीक है, इतना ही रखने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड सेल्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड। Thanks for today.